Everyone, this is class 7 geography chapter 2 inside our earth. The earth, our homeland, is a very dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and with earth. Dynamic planet changes inside, outside. Having you ever wondered what lies on the interior of the earth? What is the earth made up of? The deepest mine in the world is in South America. It is about 4 kilometers deep. In the search for the oil, engineers have dug a hole about 6 kilometers deep. The deepest mine in the world is in South America. 4 kilometers deep है. ठीक है, to reach to the center of the earth which is not possible, you will have to dig a hole 6000 kilometer deep. Okay, so जो 4 किलोमीटर और 600 किलोमीटर कितना अंतर है. So interior of the earth, just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one outside inside the other. The uppermost layer over the earth surface called the crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 किलोमीटर on the continental. अच्छा, ये पूरा मैप देख लो. सबसे पहले इनर कोर के बाद आउटर कोर, दोनों की कोर मेंटल की बाउंड्री, फिर मेंटल, फिर लिथोस्फीयर एंड देन द कोर, सॉरी द क्रस्ट. सो सबसे पतला अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस is called the thinnest. It is about 35 km on the continental mass and only 5 km on the ocean. The main mineral constituent of the continental mass is the Sial, that is silica and aluminium, and the oceanic crust made up of silica and magnesium, that is Sima. Just beneath the, अब यहाँ पे देखो ये continental crust है, this is your continent, this is the ocean and this is the oceanic crust. Just beneath the, oh shit, wait. ओके, जस्ट beneath the crust is the mantle which extends up to a, तो 35 किलोमीटर से अब कितना जाता है 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. इट इज मेनली मेड अप ऑफ नाइफ, निकल एंड फेरस, निकल एंड आयरन. द सेंट्रल कोर हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है अंदर और बहुत ज़्यादा प्रेशर है. द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द core. The radius of the earth is 6371 kilometers. The rocks in the middle of the earth crust is made up of various types of rock. Any natural mass of the mineral metal that makes up the earth crust is called the rock. Rocks can be of different color, size and texture. There are three different major types of the rock: igneous rock, sedimentary rock and the metamorphic rock. When the molten magma cooled, it becomes the solid rocks thus formed are called igneous rock. They are called primary rock. They are of two types. Okay, तीन type rock क्या होता है? Again, the earth crust is made up of various type of rock. Any natural mass किसका? मिनरल मेटल का, दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट. में मिनरल मेटल है, उसका नेचुरल मास रॉक कहते हैं. डिफरेंट कलर, साइज, टेक्सचर, तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक है: इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड रॉक. दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉक. दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक. दे आर टू टाइप: इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. इग्नियस लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर, सेडिमेंटरी लैटिन वर्ड सेडिमेंटर मीनिंग सेटल डाउन, मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फ मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म. Can you imagine lava coming out of the mountain? Lava is actually a fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks form in such a way on the crust are called extrusive igneous rock, and they have very fine grained structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rock. Fine grained होते हैं. और example basalt rock. Sometimes the molten magma cool down deep inside the earth. Such rocks are called intrusive igneous rocks since they cool down slowly. ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये बहुत टाइम लगा के ठंडा करते हैं. सिंस दे कूल डाउन, सॉरी, एक्सट्रूसिव जल्दी ठंडे हो जाते हैं, फाइन ग्रेन्ड होते हैं, और एग्जांपल बेसाल्ट है. और अंदर होते हैं आराम. सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन. ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सच अ रॉक. ग्राइंडिंग stones used to prepare paste, powder, spices and grains, they all are made up of. जो ग्राइंडिंग स्टोन किससे बना होता है? ग्रेनाइट से. रॉक्स रोल्ड डाउन, फॉसिल, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द रॉक आर फॉसिल. रॉक्स रोल डाउन, क्रैक, हिट each other and are broken down to small fragments. These small particles are called sediment. These sediments are transported and deposited by wind, water. These whose sediments are then compressed harder to form a layer of rock. This type of rock called a sedimentary rock. For example, the sandstone is made from the grains of the sand. These rocks may also contain the fossil of the plant, animals and other organisms that once lived on them. Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure. For example, clay changes into the slate and limestone into clay, slate, limestone into marble. Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and the building. You use the stones in many games. For example, 7 stones pittu, hopscotch, that is kit, 5 stone gitti. Taj Mahal is made up of white marble. Redford is made of red sandstone. You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition and cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. You have learned. And when the molten magma cools, it solidifies to become the igneous rock. These igneous rocks then are broken down to smaller particles that are transported and deposited to form the sedimentary rock. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into the metamorphic rock. The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, they melt down to form the molten magma. The metamorphic rock, which are still under great heat and the pressure, they melt down to form the molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into the igneous rock. एक सेकेंड यहाँ पे
Sedimentary rock, when the igneous and sedimentary rock subjected to great heat and pressure, they change into metamorphic rock. अब metamorphic rock और heat and pressure लग जाए तो वो molten magma बन जाते हैं. This molten magma again cool down and solidify into the igneous rock. तो ये process चलता रहता है. This is called rock cycle. Rocks are made of different minerals. Minerals are naturally occurring. मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. फिजिकल प्रॉपर्टीज सर्टेन होती हैं, केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट होता है. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. सम आर यूज्ड द फ्यूल, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम. दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री, दैट इज आयरन. For example, some are used as fuel, coal, natural gas, and petroleum. They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc. In medicine, in fertilizer, gold, uranium, etc. मेडिसिन में भी और फर्टिलाइजर में भी. नेचुरली अकरिंग होते हैं सर्टेन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, सब यूज्ड एज फ्यूल, कुछ इंडस्ट्रीज में, कुछ मेडिसिन में, फर्टिलाइजर में, एक्सेट्रा. थैंक यू सो मच. फिनिश्ड.